Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, hope you are doing good in the midst of COVID-19 and learning from our recorded lectures and e-learning. So, I am your course instructor Maimoona Noor with the course Introduction to Calligraphy, and today we have a topic is composition of calligraphy. First we will discuss about composition. What is composition? It is basically an arrangement of different elements, different components which we are using in painting. And if we are talking about calligraphy, that is the art of forming beautiful symbols by hand and arranging them well. It's a set of skills and techniques for positioning and inscribing words so they show integrity, harmony, some sort of ancestry, rhythm, and creative fire. Okay, here are two examples you can see on your screen as well. The last one is Kofik and the above is Diwani font with stylized pouring technique as well, जिसमें मार्बलिंग टेक्निक को किसी हद तक जो है वो टच किया गया है. कलर कॉम्बिनेशन, हार्मनी, रिदम, ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पार्ट हैं हमारे कॉम्पोजिशन का. कॉम्पोजिशन में कोई एक चीज़ बैलेंस नहीं करती, हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है जितने भी हम एलिमेंट्स उसमें यूज़ कर रहे होते हैं. ऑलराइट, हियर आर सम एग्जांपल्स एज वेल. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल और कल्चरल और स्टाइलाइज्ड और मॉडर्न ट्रेंड्स कैलीग्राफी, there is important thing is composition, how we are composing, how we are putting alphabets in a different way, in a beautiful way, with the manner of composition. जो भी composition के उसके लिए ज़रूरत है हम उसको follow ज़रूर करते हैं. Alright, easy tip that will improve your lettering composition. Lettering and calligraphy are a beautiful form of art that require time and practice. Hopefully this simple layout trick will help you visualize and plan better. All right, मैंने जब भी आपको composition का बताया है how you can compose, उसमें alphabets का जिस तरह हम इंग्लिश में ध्यान रखते हैं, कोई हमने प्रोमिनेंट कोई डोमिनेंट फिगर हमने दिखानी होती है, ये किसी पे एम्फेसिस ज़्यादा करना होता है, उसको उस फॉन्ट को हम या तो बड़ा कर देते हैं या बोल्ड कर देते हैं या डिफरेंट कलर्स में प्रेजेंट कर देते हैं. सेम वी कैन दीज टाइप ऑफ केसेस यूज इन आर कैलीग्राफी एज वेल. इसमें देखिए अगर ला बोल्ड है, ठीक है, साइज़ में भी बड़ा है, इलाहा इल्लल्लाहु अगर देखें तो वो रेड कलर किस तरह से बैलेंस कर रहा है, जो हम उसमें छोटे यूज़ करते हैं, शद लगाते हैं या जो यूज़ करते हैं उसके लिए. इट्स वेरी इजी टिप दैट हाउ वी कैन इम्प्रूव आर लेटरिंग कॉम्पोजिशन एज वेल. सी स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल यू सी. बैकग्राउंड पे मोटिव्स के साथ, रेपिटिशन के साथ एक हार्मोनी क्रिएट की गई है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऊपर स्टार में कंपोज किया गया है और नीचे जो है वो मून की शेप में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह प्रेजेंट किया गया है. कलर कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है. और ओवल शेप में अगर देखा जाए तो मस्जिद की जो है वो लेआउट उसको डिज़ाइन किया गया है ताकि जो है वो हमारी कॉम्पोजिशन भी बैलेंस रहे और बाकी चीज़ें भी जो हैं वो उसमें डिस्टर्ब ना करें उसको. इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कॉम्पोजिशन with the elements of motifs, repetition and shapes, जिसमें geometrical shapes के साथ जो है बहुत अच्छे तरीके से कंपोज किया गया है राइटिंग और मोटिव्स की composition के साथ. Next we will talk about what is traditional calligraphy. Traditional calligraphy can be categorized into two groups, ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी. ट्रेडिशनल में हम डिफरेंट फॉन्ट्स पढ़ चुके हैं. कोफिक, सुल्स, नस्ख, नस्तालीक, तालीक और नस्ख दोनों को मिला के नस्तालीक फॉन्ट बनता है. ब्रिका, दीवानी. ग्रेजुअली हम इनकी कॉम्पोजिशन की तरफ भी आएंगे.
व्हाट इज़ ट्रेडिशनल कैलीग्राफी में नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे देयर इज़ ओवरलैप बट लेट्स स्टिक टू बेसिक्स। अच्छा, एक चीज़ जो हमें कॉम्पोजिशन में देखनी पड़ती है कैलीग्राफी में स्पेशली, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कॉम्पोजिशन के लिए, या कुछ इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया गया कि हमें जो है वो कॉम्पोजिशन के लिए, या जिस तरह हम लैंडस्केप के लिए एक 1/3 रूल यूज़ करते हैं उसके लिए हमें स्टक रहना पड़ता है। कैलीग्राफी में हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन होता है, वी कैन डू फ्री हैंड अगर हम ओवरलैपिंग भी कर रहे हैं, बट हमें रूल्स के साथ उसको फॉलो करना है कि हम बेस जो है वो हमारी डिस्टर्ब ना हो। मैं ट्रेडिशनल कैलीग्राफी की बात कर रही हूँ। ट्रेडिशनल इज़ लाइक इट्स साउंड resembling the documents and styles of the past beautifully. One more thing students, I would like to tell you about the comparison. अगर हम ट्रेडिशनल कोई काम लेते हैं, कोई कैलीग्राफी लेते हैं और उसको कॉपी करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में रिजेंबलिंग और वो चल रहा होता है, और हर आर्टिस्ट को पता होता है कि इसने ये वाला काम कॉपी किया है तो उसके क्या कंपोनेंट्स थे और ये क्या कॉम्पोजिशन जो है वो डिज़ाइन कर रहा है। तो पास्ट के जो स्टाइल्स हैं ना, और उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिजेंबलिंग है, उसको मद्देनज़र रखते हुए काम किया जाना चाहिए। आर अल्फ़ाबेट्स क्रिएशन इज़ ड्यू टू द हिस्ट्री ऑफ कैलीग्राफी। अल्फ़ाबेट्स को अगर हम कंपोज करते हैं तो उसमें भी हम ये चीज़ देखते हैं कि पुराने ज़माने में लोग किस तरह से करते रहे हैं, कैलीग्राफी का क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और किस तरह हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। हियर आर सम एग्जांपल्स एज वेल। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ जो राइट साइड पे है पेंटिंग, वो पर्शियन इन्फ्लुएंस है उस पर। जो सेकंड है कूफिक फॉन्ट में, आप उसको भी देख सकते हैं। अल्लाह जो लिखा हुआ है वो फ्री हैंड फॉन्ट में लिखा गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा गया, ये सोल्स में लिखा गया है। कॉम्पोजिशन के लिए आपको ऑब्जर्वेशन जो है ना अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। ओके, लेआउट अच्छे से डिज़ाइन करने पड़ेंगे। जिस भी स्टाइल में काम करना है उस पर कमांड होनी चाहिए, अपनी स्किल जो है वो आपने इम्प्रूव करनी है, तभी जो है वो काम जो है वो बैलेंस होगा और कॉम्पोजिशन इंटरेस्टिंग बनेगी, राइट। सी स्टूडेंट्स, वन मोर पेंटिंग, वन मोर एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू, जिसमें जो सेंटर पार्ट है ना हमारा, उसको मोनोटोन में करके ऊपर और नीचे जो है वो ग्रेजुअली डिफरेंट कलर्स के साथ स्टाइलाइज फॉर्म में इसको प्रेजेंट किया गया है। सी स्टूडेंट्स, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप कॉम्पोजिशन, अगर कोई कैलीग्राफी कॉम्पोजिशन बना रहे हैं तो उसको पूरा फिल भी करें कैनवस को। आपकी अपनी चॉइस है कि आप किस तरह से लेआउट डिज़ाइन कर रहे हैं, किस तरह से आप कैलीग्राफी को कंपोज कर रहे हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट या कौन सा वर्ड जो है वो आपने बड़े साइज़ में दिखाना है फॉन्ट, और कौन सा आपने स्मॉल साइज़ में दिखाना है। इट्स अप टू योर ओन चॉइस एज वेल, राइट। Next we will talk about what is the difference between calligraphy and modern calligraphy. Modern calligraphy is any calligraphy that is not traditional calligraphy. It is quite simple. जो traditional calligraphy नहीं होगी वो modern calligraphy होगी. Traditional calligraphy styles like Spencerian and copperplate have been around for years, and you create them with very particular strokes and formations. Some traditionalists love the creativity that modern calligraphy allows. Spencerian style basically अमेरिकन स्टाइल है, अमेरिकन स्क्रिप्ट है, जिसको जो है वो प्रायर बेसिस पे यूज़ करते थे फॉर बिजनेस उसके लिए ना। तो अगर हम देखें तो मॉडर्न कैलीग्राफी जो है उसमें ज़्यादा मार्जिन है क्रिएटिविटी का, क्योंकि इसमें रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया जाता, राइट। Here is an example of modern trends in calligraphy. As you see, इम्प्रेशन कलर्स का दे के और उसके साथ फॉन्ट को या कोई आयत या कोई भी कैलीग्राफी का जो आप लिखना चाह रहे हैं अल्फ़ाबेट्स, उसके साथ जो है वो कलर स्ट्रोक्स के साथ हम बड़े अच्छे से कंपोज कर सकते हैं कैलीग्राफी को। एज आई टोल्ड यू, ट्रेडिशनल में हमारे पास मार्जिन कम होता है, बट अगर हम मॉडर्न ट्रेंड्स की बात करें, मॉडर्न कैलीग्राफी की बात करें, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मार्जिन है उसको सिंप्लीफाई करने का, उसको मॉडिफाई करने का, वैरायटी लाने का, उसमें कुछ नया इनोवेशन जो है वो प्रेजेंट करने का हमारे पास बहुत अच्छा चांस होता है।
You see the color combination as well. Red color, burnt umber color, viridian, इसमें यूज़ किए गए हैं कलर्स, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ. नेपल्स येलो, फ्लैश टेंट कलर. ओके, सी मोर एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्न कैलीग्राफी. ठीक है, ऊपर जो है वो बिन कलंदर का काम है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉपी भी हो रहा है, अभी भी कॉपी करते हैं लोग उसको, और बहुत अच्छी सिंपल टेक्निक यूज़ करते हैं ऑयल पेंट्स के साथ. कुफिक नीचे आपको नज़र आ रहा है, कुफिक फॉन्ट. ऊपर जो है वो रिका है, उसको सिंप्लीफाई किया हुआ है दोनों को. ओके, कलर कॉम्बिनेशन, जिस तरह कॉम्पोजिशन में हर चीज़ बैलेंस होती है, उस तरह कलर बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कॉम्पोजिशन का. डिफरेंट कॉम्पोजिशंस एज वेल एज यू सी. ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ हम किस तरह से कोफिक फॉन्ट को कंपोज कर सकते हैं, कोफिक के साथ हम कोई दूसरा फॉन्ट साथ लेके उसको भी कर सकते हैं. अगर हम ट्रेडिशनल कैलीग्राफी की बात करें, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर्स में आप लोग को बताया भी है, उसमें हमारे पास कम मार्जिन होता है दूसरे फॉन्ट के साथ काम करने का. बट मॉडर्न कैलीग्राफी में वी हैव एन ओपन चॉइस. वी कैन चूज़ 2 or 3 fonts together in one composition as well, right? It's up to our choice and depends upon our aesthetic sense how we are composing and using these fonts and justify with the fonts. Initially it will be difficult for you people as well, because इसके लिए हमें प्रैक्टिस चाहिए, हमें आपकी स्किल जो है वो उसको इम्प्रूव करना है, तभी हम एक फ़ॉन्ट से दूसरे फ़ॉन्ट में कन्वर्ट करके कॉम्पोजिशन को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं. क्लियर? Here is another example, a beautiful example of modern composition. See with different colors. पिंक की अगर देखा जाए, पिंक की लाइट और डार्क टोन्स के साथ और वाइट कॉम्बिनेशन के साथ ओवरलैपिंग करते हुए प्रेजेंट किया है. कॉम्पोजिशन आप देख लें, कोई पूरा जो है वो कैनवस फुल नहीं किया हुआ, रेपिटेशन के साथ उसको बैलेंस किया हुआ है. एक ही फॉन्ट को डिफरेंट एंगल से डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स लेके उसके साथ कंपोज किया हुआ है. अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल. ओके, सी अनदर एग्जांपल्स जिसमें डिजिटल कैलीग्राफी भी आ गई है. आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे जिस तरह से मर्ज़ी सिंप्लीफाई करके भी इसको कर सकते हैं, प्लेन भी कर सकते हैं, और उसके साथ कॉम्पोजिशन जो है वो बना रहे हैं. जो भी फ़ॉन्ट को 2 or 3 कलर्स में भी लाया जा सकता है, फ़ॉन्ट के अंदर कोई टेक्सचर भी क्रिएट किया जा सकता है. इट्स एन ओपन चॉइस फॉर यू एज योर स्किल परमिशन. Rules. There was no set rules of using the Kufic script. The only common feature is the angular linear shapes of the characters. Due to the lack of standardization of early Kufic, the script differs widely between regions, ranging from square and rigid forms to flowery and decorative ones. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर हम रूल्स की बात करें तो कोफिक में कोई रूल सेट नहीं हुआ अनलेस और अनटिल एंगुलर और लीनियर शेप्स के साथ कैरेक्टर्स को कंपोज किया जाता है, राइट? और अगर हम दूसरे फॉन्ट्स की बात करें तो उसमें हमारे पास बेस लाइन और इन सारी चीज़ों को प्लस हम एक चीज़ और देखते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्पेस. एक फ़ॉन्ट के दरमियान दूसरे फ़ॉन्ट के दरमियान क्या इतनी कॉम्पोजिशन, इतनी कम्युनिकेशन है कि वो एक दूसरे को इंटरेक्ट कर रहे हैं. इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. Another example, calligraphers may be lenient in the rules of writing any type of line, but they are more accountable and more focused on the commitment to the rule in this, right? कैलीग्राफी जो हम बेसिकली देख रहे होते हैं उसमें हमें जब तक हमें स्टाइल और टाइप नहीं पता चलेगी हम उसको नहीं कर सकते.
कैलीग्राफर्स कोई भी कैलीग्राफी करें उसके लिए वो अकाउंटेबल होते हैं कि वो किस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं और उनकी कमिटमेंट रूल्स के साथ कितनी स्ट्रॉन्ग है. सी एन एग्जांपल, इट इज़ हियर फॉर यू. जो भी फ़ॉन्ट जिसमें भी प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो आपकी अलाइनमेंट होती है. जो भी जिस तरह से भी आप राइटिंग को कंपोज कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करते हुए, अलाइनमेंट को बैलेंस करते हुए उसको प्रेजेंट करते हैं. Here is one more example for you, जिसमें इल्यूमिनेशन के साथ कैलीग्राफी को कंपोज किया गया है, जिसमें अलाइनमेंट बैलेंस है. आपकी इल्यूमिनेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है स्क्रॉलिंग में आते हुए, और वो आपकी कॉम्पोजिशन को, आपकी जो लेटरिंग फॉन्ट है उसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बैलेंस कर रही है. क्लियर स्टूडेंट्स? मैं आप लोग के साथ एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें जो है वो पूरी कंपोजिशन बनाना सिखाएंगे. तो मेरा ख्याल है इट विल बी अ ग्रेट लेसन फॉर यू टुडे, राइट? Assalamualaikum, my name is Rafa Razik and welcome to my channel. Today's video is going to be an interesting art tutorial. So not talking further, let's begin the work. And before I begin, I'll be showing you all the products that I've used to make this particular art piece. And also, when I list out the products, that doesn't necessarily mean that you should be using the products that I've used brand-wise, because there are so many brands all over. So I recommend that you try out the beautiful brands that are accessible to you, and you can experiment them and see which one suits you. Also, I've listed out all the products in the description box below. So firstly, we need a stretched canvas, and this is of size 60 by 60 centimeters. You can see this. I got this on Amazon. And then I have used a canvas primer. So this is it. Many of you ask me why should we use a canvas primer, because this is to prime your canvas, to prep your canvas. Also, this will make the surface smoother, and the pores will be covered, it will be minimized, and etc. So since I'm going to do an Arabic calligraphy art piece, my columns will glide really smooth on the canvas when I use a primer. Okay, so this is a primer, and this is from the brand Camel. It's a Gesso primer. Last time I used another brand, this time it's another brand, so keep trying out different materials. Then after that, I used some acrylic paints. You can also use oil paints, but I don't know much about oil paints. I think oil paints are thicker, and for canvas, I personally use acrylic tubes. I used three colors. One is Prussian blue, and then I've used cobalt teal and titanium white. So this is almost over because I've used it the most. I'll show you the brushes, mainly this brush for your background, and you can even use a smaller one. The wider your canvas gets, the wider your brush gets, so that way it will be easier for you to paint it up. And then I've used this thin brush, okay, you can see. And then I've used my colors. Now this is my set of Selicolums. Those who follow me on Instagram know that I rave about the Selicolums. These are made of Turkish wood. These are my column set. I have a set of 10. I have used a varnish, an artist picture varnish from the brand Arfina. I hope you can see it. Many of you ask me why a varnish. Now you need to know that your painting or the artwork you're going to create is very valuable, should be valuable, and it's not something you do just for the sake of doing it. So it has to be kept safe. It should be worth the quality and worth the effort. Showing you all the products. So now let's start the work. So here I am unpacking my canvas which I ordered from Amazon. Now there are so many options to get your canvases from. It can be from an online store or from a local store. After that, I am going to prime it. So I think I've mentioned it before that when you need a dark background, you have to prime it with a dark primer, and if you need a lighter background, you can use a white primer. So here my background is going to be something dark. I think I'm going to create a galaxy background, so I'm using my black using primer. Your flat brush, make sure that you have evenly coated the primer all over the canvas. Now especially on the areas where you are going to write
on the top of it with a column, because you need your columns to be smooth on the surface. And after you've finished one coat, you can wait for a while and also add another coat, up to you. 2 to 3 coats are usually painted. Wait until it has dried out and start your background layer. Now I've used the acrylic tubes that I mentioned earlier in the beginning of the video, and I'm going to create a galaxy background. I'm mixing all these colors and creating a background of my choice. Always keep in mind, whenever you do something large, something vast, you need to make sure that it's distributed evenly on the whole surface. I mean, your background should not look incomplete at the edges or um, at the top part, unless you have purposely decided to do it that way. But in this case, I am trying to evenly coat it. I'm trying to get the effect complete even at the edges of the stretched canvas. So when you take a stretched canvas, you'll have some edges on all four sides. So I am even, you can see me doing the background exactly like the one at the top on the edges, so that it looks complete. Otherwise it might look incomplete and a little unfinished and dirty. Now the choice of colors depends on what colors you would like to show on your background. So I've used a pinch of red and pink here. I just want to break the solid blue here and just add a little life to my canvas. Make sure you are evenly distributing your coverage all over the canvas, even at the edges. This is a very important point to keep in mind. After each step, make sure that you've kept it to dry. And now here I take a toothbrush and I dip it in some white diluted acrylic paints, and I start just spraying it over the canvas like you can see here. This is nothing fancy, it's very simple. Just dip your brush and just spray it with your fingers. That's done. I've let it dry overnight, and here I am ahead with my next step. That is the lettering part. Definitely you'll need a ruler, especially when you're writing on a seamless canvas which has no finish line or end line, and especially if you want to do something elongated or something which has a linear form. So I'm doing something like that. I'm composing my canvas, which is very essential. You need to make sure that your canvas fits well, the proportion is fine, the writing is not too big, the background is not too small. You need to make sure that it has equal distance from all the sides, if that's what you intend to do. That's done. Moving on to the writing part, I'm mixing some diluted white acrylic paint with a brush, and then I dip my columns and start writing. Before doing this, make sure that you take a pencil and also write on top of this. Now I don't always write with a pencil, but I've done that here after this line. Basically I tape two pencils and stick it together. I mean tape it means stick it together and write on the canvas, and then follow this with a column. Now when you render on a canvas, let me tell you something. It's not so easy compared to what you do on a glossy paper or an aha paper or a hemp paper, that is calligraphy paper. Mainly because canvas has a different texture, it has a different consistency. Even um, when you keep this on a table and do, you need to know that it has to be comfortable. The rendering should be comfortable, your sitting position should be comfortable, the table should be comfortable. Even things like your hand rubbing over the undried portion, that makes it uncomfortable. So what I do is I do this on and off. I take breaks. Now you can see that I'm using my pencils to render the rest of the portion, because I don't always use pencils. Depends on what
sometimes I might feel like I need to use the pencils to get it better, so I do that. Anyway, you can see that I do it on and off in the remaining portion of the video. So these are the things that you need to keep in mind. Your sitting position, your hands, and your paint and the timeline and everything. So there's no point in hurrying it. There's no point in hurrying with anything. I take breaks, I let it dry, I let it cool, then I come back. Maybe it takes days, maybe it takes weeks. By the time you finish this video, you'll realize that I have filmed this tutorial taking different parts of the day, different days, different timings, etc. I don't hurry up. There's no point in hurrying up because you need to get the perfection, you need to get the finishing, especially on a canvas. Now, I could finish something like this in a day when it comes to a glossy paper or a calligraphy paper, but this is a stretch canvas art, and that's why I've done a detailed tutorial. I don't think I've skipped any steps while showing you all, because I always get DMs asking me what you did after that, what did you do after this. So I thought I'll film the maximum possible. I think in between I must have run out of memory. I mean, the camera must have run out of memory, and just like that, I've missed some portions, but otherwise, I've tried to capture all the steps. See, basically, I did this tutorial because I know that maybe 5% of my followers would be watching this. That's it. But those 5% should get the maximum value, because you need to know that it's not a piece of cake. It's not something you can finish just within a day and pack and give it to whoever you want to. So I take my breaks. I sit for a while and then I get up. When I get bored, I go have a snack. I go with my baby, or maybe out, or maybe do the other works, and then I come back again. Meanwhile, I I'm happy that when you take breaks, you're actually giving it time to naturally dry out. So that's one thing. And so do not hurry up. Sometimes it takes days, sometimes weeks, and but that is finally the final thing. The final importance goes to the final finished product, especially when it comes to canvas art. Now, I could have done something like this in a day when it comes to a glossy paper or a calligraphy paper, uh, but when it comes to canvas, it's a canvas art. This is a canvas art tutorial, so this is not something which you can finish um, in no time. Actually, when I filmed this video, I know that not all of my followers would be watching it. Maybe just 5% would be watching it completely. But then I thought that 5% should get the maximum result out of this, and hence I don't think I've skipped any step deliberately. Moving on, I'm using a fabric outliner. This is an acrylic outliner as well. You can get it in any local store, stationery store. It's called a fabric outliner. I think I missed to um, mention this in the products, so I'll be writing that in the description below. After this, I'm filling out the missed out parts. Now, you might be wondering why I kept that aside. Nothing much. The paint was not dry there, so I was not comfortable writing it there. So I waited that the paint be dry and then maybe I can continue. Now, this is all personal choice, because that is Allah, and I think Allah is the most difficult word for me to write. So I always want it to be the safest possible so that nothing goes wrong. Whatever I try, however I try, it doesn't come out perfect. So I kept it towards the end. I hope you all know that for the harkat, you need to use a column with a smaller chisel tip. Done with that, again moving on. Now I'm going to darken all the letters, because I prefer a high pigmentation because that makes the letters stand out. For me, background is something secondary, because for me the meaning and the words and the letters are something that should stand out, and hence I wanted to stand out really well, that all the concentration and the focus goes on it. I use a round brush
and I'm darkening and filling it up. All this is because this is a canvas art. If you are using, if you want to do on a paper or a smooth paper, glossy paper or calligraphy paper, then all these steps are not there. So again, those who watch this video, please don't think that this is a pakka calligraphy tutorial as it is, because this is also an art mixed tutorial, because when you want to do on a canvas, because this is something which is been asked to me by so many girls who follow me on Instagram. A lot of people ask me to put this tutorial, so this is for them. Almost done with the first coating. What I usually do is, after I arrive with the color, I give a coating like this with a brush, and then I give a second coating to finalize or to finish the edges. Now that to me is very important, because you might skip it out, but see, this is the step what I was talking about. I am finishing it. I'm finally finishing the edges, making it pointed or maybe making it precise, so that the letters get all the focus, the words or the wording gets all the focus. For me, that's very, very important. And this takes the maximum time. There were times where I just felt like quitting it up, but no, that's not how you do it. This makes a lot of difference too. Like, you can compare with the canvas which you have finished and not finished, especially if you're using a brush or if you want a pigmentation. For me, I like it like this.
and you'll definitely see the result once I'm done with this. Maybe you must have seen the picture already on Instagram, but once I've done finished this, you can feel that the words are really standing out. The words protrude. The words have a feeling there, and that's exactly what I always keep in mind when I start doing an art project. After this, I like to keep it for drying for as many days as possible, maybe for weeks, because natural drying is the best. And here, after drying, I am spraying my matte varnish spray, and I'm done. Spray 2 to 3 coats after drying. So thank. Okay, students, I hope this YouTube video will be helpful for you whenever you start calligraphy. These points you can see, um, keep in your mind, so it will be helpful for you, right? Thank you, take care, have a good day, Allah Hafiz.